Very good evening, everyone. Let's join others. Hello, Yogesh. Hello, Antara. Today, Lucky Chem came here. Yogesh and Antara, thanks for joining. How are you people? So, very good evening, everyone. Let's start the day without wasting our time. So, first of all, that today we have our day 16, which is from week 3. And as yesterday's session we have talked about reading skills, today we'll be talking about writing skills.
Let's move further as week 3 is all about reading and writing skills. Let's go to start the discussion for introduction for writing skills. What are we going to do basically? Then what is the outcomes today? The today's class objective. Let's get first, then you can get outcomes. We are going to talk about strengthen writing skills by focusing on writing themes and effective expressions. So today in that class we will be having a discussion that what are the different type of writing skills. That basically that we must you must be not aware, but we'll be getting clarity over on it. Then what types of writing skills do we have, and how do we use them, and when do we use them? So if you see right now on my screen that I have I'm showing you that objective of the lessons, learning outcomes, which we are going to get to know today. We'll talk about master the art of developing and exploring various writing themes. So in आज की क्लास में हम बहुत सारी writing themes के बारे में बात करेंगे कि writing themes क्या हैं, क्या क्या writings कौन कितने types की writing होती हैं. And we will also talk about the significance of writing themes in structure and tone, कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, जो डिफरेंट राइटिंग थीम्स होती हैं उनके क्या स्ट्रक्चर हैं और किस टोन में आपको उनको एक्सप्रेस करना है. Later on we will be practicing writing with different themes to develop creativity and versatility. कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ. मैं आपको टाइम दूंगा, तो we will try to practice them. By that we can move further, that writing पर थोड़ी सी कमांड बना लें अच्छी. Before starting that, let's understand writing theme. What is writing theme? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ writing theme. What is that writing theme? So when we talk about writing theme especially, it is a central idea or subject the writer which explores a piece of writing. It can be narrative, persuasive, descriptive, expository and depending the purpose of writing. So अगर हम writing theme की बात करें, ये क्या होता है, आपके किसी भी सब्जेक्ट का एक सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल आइडिया है, या आप सिंपली कह सकते हैं राइटर के द्वारा किया हुआ कोई भी एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो आपके डिफरेंट किसी भी टाइप्स का हो सकता है. दैट कुड बी नरेटिव, दैट कुड बी परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी. अभी नरेटिव, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ये डिपेंड करते हैं कि आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं. देखिए ये चीज़ें आपने, मुझे नहीं लगता कि एवरीबडी मस्ट हैव अवेयर अबाउट दिस टाइप्स ऑफ राइटिंग. दैट व्हेन यू मूव फॉर दैट हायर एजुकेशंस, when you learn how to write articles, when you start reading articles, then you try exploring these things. So this today's writing lesson is going to be very important. Maybe that there would be many that difficult words, so you will try to find the meaning. I would also explain it, but I would request you that अगर पेन पेपर के साथ बैठे हुए थोड़ा सा राइटिंग की स्पीड को बढ़ा लेना. बाद में लिखने का कोई झंझट मत पालना, अभी साथ के साथ नोट करते जाना, बिकॉज देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो वेरी गुड इवनिंग अंकिता, लाली, अंतरा. माई हेल्थ इज नॉट गुड. ओके अंतरा, प्लीज टेक केयर. बाय द वे, व्हाट हैपेंड टू यू? विष्णु, गुड इवनिंग धर्मेंद्र. लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ राइटिंग थीम्स. पहले राइटिंग को अभी जो मैंने आपको बताई थी डिस्क्रिप्टिव, पर्सोनिफिकेशंस एंड ऑल, उनको जानने से पहले राइटिंग की थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो बेसिकली वी हैव पीपल 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग थीम्स जिसके बेस पर आपके जो कंटेंट है लिखा जाता है. फर्स्ट वन इज पर्सनल एक्सपीरियंस राइटिंग थीम, वेयर वी फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन. जहाँ आप स्टोरीज के बारे में लिखेंगे, बताया जाता है, या जो पर्सनल रिफ्लेक्शंस हैं, बायोग्राफीज वगैरह जो लिखी जाती हैं, कुछ पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस राइटिंग थीम में आते हैं. नेक्स्ट इज सोशल इशू. सोशल इशू में क्या आता है आपके? सोशल इशू में है आपकी राइटिंग अबाउट करंट इवेंट्स और सोसाइटल चैलेंज दैट यू नो ऑलरेडी. व्हेन यू टॉक अबाउट दैट करंट इवेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली, you are trying to change societal challenges, that you can say social issue. Next is fantasy, or fantasy means imagination. I think you all know the meaning of this word fantasy. So let's say creating stories that venture into the realms of fiction and creativity. यानी कि जब भी आप कोई स्टोरी बना रहे हैं जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और अपने इमेजिनेशंस को शो करना चाह रहे हैं, then that will show your fantasy writing themes or imagination writing themes. Sometimes what happens is that we have habit to write stories that you write some imaginary story. Once upon a time there was a king who was finding a queen. So it is based off your imagination story that we will use that imagination theme. Next is moral lesson stories, where we will talk about writing the conveys life lessons और ethical discussion. जहाँ पर आप लाइफ लेसन्स की बात करना चाह रहे हैं, एथिकल डिस्कशन करेंगे आप थोड़ा सा,
You will show them that kind of case studies. You will try to teach them lessons, motivational lesson, inspirative things. In that case, you will be using moral lesson themes of writing. Least but not last, which is all about scientific and technical, exploring topics that requires explanation or detail analysis. जब भी आप कोई टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन अपनी डाल रहे हैं, अपना एक्सप्लेनेशन आप उसमें ऐड कर रहे हैं, and you want to add or you are adding that detail analysis of the topic, then we can say you are using scientific or technical theme of writing. Like right now you can say technical theme of writing which I am using, क्योंकि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक लिया, टॉपिक को रिसर्च किया, अपने आइडियाज़ लिए, उनको कंपाइल किया, and then form them in the PPT form where I am writing short and concise, and later on others thing I'm explaining from my side. So that can also come in the same types of theme. Now let's understand there are some common themes and which I shared you and their structures that अभी मैंने जो आपको 5 थीम्स बताई थी उसमें से 2 थीम जो है वो 3 थीम्स, देयर आर 3 थीम्स आर वेरी कॉमन. इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इनको अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली यही रहती हैं सबके साथ. पर्सनल लिखवा लिया, आप सोशल इशू के बारे में लिखवा लिया, इमेजिनेशन के बारे में लिखवा लिया, तो उसमें किस तरीके के टॉपिक आएंगे और आप उन्हें किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो हम अब बात कर लेते हैं. Let's start from personal experience. So what are we going to write in personal experience? First, these personal experience are focusing your personal journey or significant events in your life. When you are going to write it, then how will you start? In introduction, you will set a scene. Body, you will describe the events and feelings involved. And then conclusion, you will reflect on impact or lesson learned. Simply, let's say I am going to write my personal experience, that is my board exams, where how I cracked my, or let's say how I perform well in board exams, or not well but satisfactory. तो पहले मैंने सीन क्रिएट कर लिया कि ज़्यादा मतलब विदाउट कोचिंग के और उसके किस तरीके से बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने परफॉर्म अच्छा किया. इट इज़ माई सीन दैट आई एम गोइंग टू राइट अ इंस्पिरेटिव स्टोरी. एंड बॉडी, यहाँ मैं इवेंट्स लिखूंगा, किस तरीके से मैंने तैयारी की, लेट नाइट स्टडी की, अर्ली मॉर्निंग स्टडी की. आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ सीनियर्स, टीचर्स, or some other people who were expertise in their subjects without spending money. And I will be sharing my feelings as well, that how was I feeling on that time. कंक्लूजन में अब मैं क्या करूँगा, कंक्लूजन में लिख दूंगा इन द एंड थोड़ा सा सक्सेस थीम दिखा के कि दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. सो दिस इज़ नॉट कंपल्शन दैट इफ़ यू डोंट हैव ट्यूशंस और कोचिंग देन यू कैन नॉट क्रैक और यू कैन नॉट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यू कैन. सो दिस इज़ द लेसन विच आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, जो मैं दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप इज ऑल ओवर. नेक्स्ट थीम इज सोशल थीम्स. सोशल थीम में क्या आता है भाई? सॉरी. इन सोशल थीम व्हाट डू वी हैव? एड्रेस सोसाइटल चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और इनइक्वालिटी. So these are the social changes. When somebody is asking you to write so can you please describe social issue and can you share others things, then can you tell about importance of that educations in your life, or let's talk about inequality, so that gender biasness. Yes, then somebody asks you to write on these topics, then you have to use common writing themes which is all about social issue themes. And where how are you going to write? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में आपको इशू को एक्सप्लेन कर देना है और उसके इंपॉर्टेंस लिख देने हैं. अब बॉडी में आप क्या करेंगे? यू विल प्रोवाइड एविडेंस और यू विल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड आर्गुमेंट्स. लेटर ऑन कंक्लूजन यू विल बी सजेस्टिंग सम सॉल्यूशंस और यू विल कॉल टू सम एक्शंस. This is done. When we talk about fantasy and imaginations, there you will be focusing on creative writing that explores fictional words and characters and events. Imaginations में आप क्या करेंगे कि आप क्रिएटिंग जो इमेजिनेशन वाला है, सबसे पहले आप फोकस करेंगे वहाँ पर जो एक्सप्लोर करेंगे आप फिक्शनल वर्ड्स को, यानी इमेजिनेशन वर्ल्ड को. आप इमेजिनेशन के हिसाब से अपने स्टोरीज को इमेजिन करेंगे, अपने इमेजिनेशन के कैरेक्टर्स उसमें रखेंगे और इमेजिनेशन ही इवेंट्स रखेंगे. अब अपने स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में अपनी सेटअप कर दीजिए वर्ल्ड एंड कंफ्लिक्ट. आप बता दीजिए क्या आपकी थीम है और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम है. बॉडी में आप डेवलप करिए द प्लॉट एंड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि सीन आप उसमें लिखेंगे बॉडी में, जो मेन बॉडी है, जो आफ्टर इंट्रोडक्शन आप लिखने जा रहे हैं इस थीम में, इमेजिनेशन स्टोरीज में.
Later on, you will be writing there, showing your imagination. How was that राजा का महल, रानी का महल, राजा की क्या पावर्स थी, रानी की क्या पावर थी, कितने वो पावरफुल थे, कितना उनके पास प्रजा था. When we start writing, showing their creativity, यहाँ आप अपनी creativity शो कराएंगे. कुछ आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, कुछ सिचुएशंस लिख दीजिए. Later on in conclusion, you will be keeping resolve the conflict or leave room for imaginations. अब यहाँ क्या करेंगे आप कंक्लूजन में, जो स्टार्टिंग में आपने प्रॉब्लम दिखाई थी अपनी इमेजिनेशन स्टोरी में, यहाँ उसे सॉल्व कर लेंगे. और या फिर आप क्या करेंगे, एक अलग से सिचुएशन और बना देंगे जिससे लोग इमेजिन कर करके थोड़ा सा और आगे उसके बारे में सोचेंगे. सो दीज वर द कॉमन राइटिंग थीम्स विद देयर स्ट्रक्चर which we all can follow. Yes. So please tell me, are you able to understand till here? Very good evening, Brajesh. You are here after a long time, man. After I think 2-3 months. So I hope you were clear till here for the writing themes. Now let's understand that we are going to move for writing types of writing. I would request you, please listen to me very carefully, and if requires, then please keep writing with me because it's very important. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेटिव राइटिंग स्टाइल्स क्या होती है. देखिए, नरेटर आपने वर्ड सुना होगा. अगर आपसे कोई कह दे कि लेट्स से देयर इज माय फ्रेंड एंड हर नेम इज रजनी, शी इज वेरी गुड नरेटर इन स्टोरीज. सो इट मीन्स नरेटर मतलब जो स्टोरी बताता है और जो स्टोरी सुनाता है उसको हम नरेटर बोलते हैं. तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो नरेटर राइटिंग स्टाइल है, नरेटिव राइटिंग स्टाइल्स है, कहीं ना कहीं वो स्टोरी से रिलेटेड है. तो उसमें आप क्या लिखेंगे, क्या आता है नरेटिव राइटिंग स्टाइल्स में. इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है पीपल सीक्वेंस, यानी कि क्रम में, सीक्वेंस में बताएगा स्टोरी. उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, करेक्टर्स हैं, सेटिंग मतलब जो सीन्स हैं, प्लॉट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं. इस ये लाइक दैट यू विल बी गेटिंग देयर लोकेशंस, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, दीज थिंग्स यू विल फाइंड देयर. और नरेटिव थीम स्पेशली किस चीज़ पर फोकस करेगी, पर्सनल ग्रोथ पर, चैलेंजेस और जो भी ऑब्स्टेकल्स यानी जो बैरियर्स चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम आने के लिए दिखाएगा नरेटिव स्किल्स. अब लाइक से एग्जांपल ले लेना नरेटिव थीम्स का, ओवरकमिंग फियर. अब मान लीजिए एक थीम दे दी आपको कि ये थीम है ओवरकमिंग फियर, उसके ऊपर एक कुछ स्टोरी लिख के दिखाओ. तो प्लॉट आइडिया आपके क्या हो जाएंगे, अ पर्सन फेसेस देयर ग्रेटेस्ट फियर, एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग एंड लर्न्स हाउ टू मैनेज इट. अब आपने इसके प्लॉट आइडिया दिखा दिया, ओवरकमिंग फियर यानी डर से बाहर आने के लिए आपको टॉपिक दे दिया. और अब आपने उस पर क्या लिख दिया, आपने बता दिया कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसका बड़ा फियर क्या होता है, लाइक दे हैव मैनी फियर. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फियर, पब्लिक स्पीकिंग फियर. लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, वट एवर द लैंग्वेज दे नो दैट, बट द बिगेस्ट कंसर्न दैट दे आर नॉट एबल टू शेयर द नॉलेज फ्रंट ऑफ द पीपल. सो वी कैन से दे हैव पब्लिक फियर, public speaking fear, and then they learn it how to manage it. So this is narrative theme. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इसे लिखेंगे, लिखने के बाद जब आप बोलेंगे तो वो आपका स्टोरी बेस हो जाएगा. So that we call narrative writing styles. Clear till here? Clear? Are you listening? Like people are sleeping, I think, in chat box. People like keep telling me that yeah, we are clear or not. I am keeping my mobile phone next to me, so keep turning my face and having eyes on chat box that कोई किसी के ने क्वेश्चन ना पूछा हो मुझे जवाब देना पड़ जाए. So please keep active in that chat box. So I think you are here. Okay, Dharmendra. Now let's see what is persuasive writing. ये आपका नेक्स्ट टाइप है राइटिंग का, जिससे हम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सो व्हाट बेसिकली परसुएसिव राइटिंग इज, इट एम्ड एट कन्विंसिंग द रीडर्स टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और टेक एक्शंस. ये रीडर्स जो भी पढ़ेंगे इसको, आपके कंटेंट को, अगर आपने परसुएसिव राइटिंग फॉलो कर रखा है तो ये क्या करेगा, आपकी ये रीडर को एक तरीके से फोकस कर देगा कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, एक पार्टिकुलर एक एक्शन पर, एक ही चीज़ पर फोकस किया जाएगा. क्योंकि परसुएसिव का मतलब होता है ये इन्वॉल्व करेगा आर्गूमेंट्स को. जब भी आपको आर्गूमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और लाइक यू हैव टू राइट एविडेंस दिखाने हैं, क्लियर कॉल ऑफ एक्शंस, जब भी आप ये चीज़ें लिखेंगे देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू राइट परसुएसिव राइटिंग स्टाइल्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक से थीम ले रखी है मैंने, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग. अब ये लिख दिया कि एक टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग. सॉरी, allow me a minute, people.
Thank you so much for allowing me. So yeah, if I say that persuasive writing में क्या हो जाएगा आपके, मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया आपको कि ब्रजेश आप इस पे लिख के दिखाइए द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग। जब आप इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग पे लिखेंगे तो कोई तो आर्गूमेंट दिखाएंगे ना अपना, या तो आप उसको आर्गूमेंट करिए या तो आप अपना कोई एविडेंस दीजिए, या फेवर में दिखाइए या डिसफेवर में दिखाइए, कोई पॉइंट तो अपना लिखेंगे, कोई तो एक्शन दिखाएंगे। एंड देन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर एक्शन, देन व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स से देयर इज एन पॉइंट व्हिच आई हैव मेंशन, the argument is why recycling is essential for environmental conservations and how everyone can contribute। अब यहाँ आपने अपना आर्गूमेंट दे दिया एक, लाइक अब आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको क्यों रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, और सभी लोग इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट सहयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं अपने आर्गूमेंट शो कर रहे हैं राइटिंग में, एविडेंस दिखा रहे हैं और कोई भी एक्शंस को क्लियर कर रहे हैं, दैट अंडरस्टैंड आप परसुएसिव राइटिंग को ही यूज कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग विच इज कॉल्ड परसुएटिव राइटिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज पीपल विच इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। Descriptive writing to, like, you must, I think you all must have used during exams and all. So basically descriptive writing is that we always use for describing a person, place, object or event for a vivid detail appealing to the senses. So whenever something, it is not about only person, place, it can be for anything. Whenever something has been asked to describe in descriptions, then we use descriptive writing skills. Yes, examples we can say, let's say a peaceful garden. यस, अगेन आपको एक थीम दे दी, आपको एक पीसफुल गार्डन के ऊपर एक टॉपिक लिखना है, तो अब वहाँ क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे आप। अब पहले तो कलर डिस्क्राइब कर देंगे गार्डन का, ग्रीन कलर है और देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, और लेट्स से ब्लू कलर इसका देर इज अ फाउंटेन। उसके बाद आप स्कैन्स बता देंगे, साउंड्स बता देंगे, बर्ड्स के साउंड, चिरपिंग साउंड्स, एनिमल साउंड्स, एंड इमोशंस यू एसोसिएट विद द गार्डन, और आपको किस तरीके के इमोशन से आप कनेक्ट हो गए वहाँ जब बैठ के, आपको पीसफुल लगा, मे बी यू आर मिसिंग समबडी, और मे बी यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग रिलैक्स, और यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड। इट मीन्स दैट आप चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं राइटिंग का, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। क्लियर? आर वी क्लियर टिल हियर पीपल? Nobody is active in chat box. Yeah, how would I got to know that you are listening or not listening? It should not happen that in flow I am keep telling, and then later on you are saying, Niketan, you have start sharing. Are you getting something? Are you clear till here? Please tell me, are you getting something? Are you clear till here? No idea? Okay, good to know. Now next is expository writing. Expository, what is the meaning of expository? So what I do, like when I learned first time these types of writing, that by the help of my one of that mentor has taught me these things, and my guide has taught the types of writing. So पता नहीं क्यों like ये रहता था कि expository को मैं हमेशा भूल जाता था. Then he told me that you remember expository, that expository से ex को याद रखो और explanation से ex को याद रखो. कभी भी आपसे पूछा जाए एक्सपोजिटरी राइटिंग टाइप्स क्यों यूज किया जाता है, देन यू सिंपली टेल whenever I have to explain something or whenever I have to inform something. That is called expository writing skills. So basically it involves breaking down complex ideas into understandable components. जब भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ होगी या कॉम्प्लेक्स थिंग्स होगी, इसको आपसे पूछ लिया जाए इसको लिख दो, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट,
तो आप क्या करेंगे, देखिए आप उसे ब्रेक करके बड़ी चीज़ों लाइक आप उसे बड़े आर्टिकल से ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में लिख देंगे और की पॉइंट्स में लिख देंगे। दैट मीन्स यू आर यूजिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग थीम्स। एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर। लेट्स से एग्जाम्पल इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड इवनिंग प्रशांत। अब आपसे एक मैंने थीम दे दी कि आप बताइए फोटोसिंथेसिस क्या है। एक वर्ड में तो कोई नहीं बता पाएगा। इट्स कंप्लीटली प्रोसेस। यस, as humans make food in the kitchen, plants also make their food, but not in the kitchen. They make in their plants leaf. That is why we call that plants leaf that kitchen of the plants. ये जैसे हम लोग का खाना हमारे घर की किचन में बनता है, प्लांट्स का उनकी लीफ में बनता है। अब इसको हाउ कैन बी डिस्क्राइब? सो लेट्स से explanation you can see here which I have mentioned. Describe how plants convert sunlight into energy through photosynthesis and why is it important for our life on earth. अब एक्सप्लेन करना है आपको। अब यहाँ आप लिखेंगे देन यू हैव टू राइट कंप्लीटली प्रोसेस। किस तरीके से सन अपनी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के साथ और ये वैसे यूज करता है उसे। एंड देन लेटर ऑन दैट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स को अपना खाना बनाना है, उससे हमारा क्या कनेक्शन। तो आपको यहाँ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, स्टेप्स बतानी पड़ेंगी फोटोसिंथेसिस की, क्यों ज़रूरी है प्लांट्स का खाना बनाना। देन देयर इट मीन्स यू हैव टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू अंडरस्टैंडेबल कंपोनेंट्स। ऊपर देखिए जो लिखा हुआ है व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी आइटम। यहाँ आपको क्या करना है, जो ब्रेक डाउन करनी है आपको कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अंडरस्टैंडेबल कंपोनेंट्स में। एंड दिस इज कॉल्ड पीपल एक्सपोजिटरी राइटिंग। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं उनको सिंपल थिंग्स में चेंज करना ही आपकी क्या कहलाएगा, एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलाएगा, जिसे बेसिकली हम लाइक साइंटिफिकली प्रोसेस और ये सब सारी चीज़ें को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स टू एक्सप्लोर व्हाइल राइटिंग ऑन डिफरेंट थीम्स। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप यूज़ करेंगे राइटिंग, जब भी आप लिखने जा रहे हैं टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स तो हर कोई यूज़ करेगा। देयर इज़ नो कंपल्शन के OMR एग्जाम्स ही नहीं चलते रहेंगे। वी गेट द टाइम, मेनी ऑफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू राइट एग्जाम्स इन रिटन बेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम वेर यू हैव डिस्क्रिप्टिव आंसर और लीव एग्जाम दैट some people have a habit to write articles, letters, making notes or keeping essay and all. Then in that case maybe these themes can help you a lot. So these are the some themes which can help you, key elements especially to following on some themes. Let's understand them. First one is clear purpose. Every theme should have a clear objective, whether it's to inform, persuade, describe or narrate. आप कोई भी थीम यूज कर रहे हैं, आपको पता है सबकी सब थीम, एवरी थीम हैज देयर ओन वैल्यू। सो व्हाइल राइटिंग ये नहीं होना चाहिए कि आप थीम्स को मिक्स कर दें। यू हैव टू बी कीप सेपरेटिव। टोन एंड स्टाइल, एडजस्ट योर टोन बेस्ड ऑन द थीम। अगर मान लीजिए आप परसुएसिव राइटिंग यूज कर रहे हैं, परसुएसिव राइटिंग आप लिखने जा रहे हैं, तो आपका जो टोन है वो फॉर्मल एंड असर्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि लाइक यू आर राइटिंग इमोशनल, पर्सनल, यू नीड टू फॉलो दीज टोन्स एज वेल। और टोन आपका कैसे विजिबल होगा, योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से आप सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं। सो वेरी 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 माइंडफुल फॉर इट। व्हेन यू आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स देन यूज सेंसरी एंड विविड इंफॉर्मेशंस। बाय द वे, हाउ मेनी नो द मीनिंग ऑफ विविड? हाउ मेनी नो द मीनिंग ऑफ विविड? Please tell. The meaning of vivid? Nobody knows. Oh, I have shared already in before three classes we have discussed. What happened? Are you there? आप लोग यहीं हैं या चले गए? Ankita, you know. Then why don't you tell? Please share. What is the meaning of vivid, dear? डिबेट नहीं बताना आपको। यू डोंट हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ डिबेट, इट्स विविड।
VIVID. What is the meaning of vivid? Hmm. Very good. So vivid means clear. Yes, so you all have to use that clear sensory and clear types, clear tone when you are using descriptive writing. ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और पढ़ने वाला ही समझ ना पाए कि आपने लिखा क्या है. So you have to be always clear with your data, sentences, examples and all. नरेटिव राइटिंग स्टाइल्स दैट इमोशनल एंड पर्सनल. जब भी आप नरेट करने जा रहे हैं स्टोरी, डेफिनेटली इमोशन तो होंगे आपके. सैड स्टोरी लिखने जा रहे हैं, लव स्टोरी लिखने जा रहे हैं, रोमांटिक स्टोरी लिखने जा रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरी लिखने जा रहे हैं. यस, देन दीज ऑल स्टोरी शुड हैव इमोशंस एंड पर्सनल दैट connections which readers can get interesting. Hmm. Yeah, yeah, life like. You are right. You have shared. Yeah, yeah. Now let's understand organizations. Structure your writing according to the type of theme. अब आपको ये देख लेना है कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप राइटिंग टाइप्स ऑफ राइटिंग को एक्सप्लोर करिए, उस टाइप्स ऑफ राइटिंग को फॉलो करिए, कहीं और मत जाइए. नरेटिव, लिनियर, बिगिनिंग, मिडिल, एंड. नरेटिव राइट, मान लीजिए आप नरेटिव स्टोरी यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको बिगिनिंग, मिडिल, एंड तीनों पे बड़ा ध्यान रखना है. कैसे आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है, कैसे मिडिल में आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और जताना है, और प्रॉब्लम दिखानी है आपको स्टार्टिंग में, इन दी एंड आपको उसका सॉल्यूशंस लेके आना है. डिस्क्रिप्टिव में यूज इमेजिनरी एंड सेंसरी डिटेल्स. डिस्क्रिप्टिव जब भी जा रहे हैं, दैट्स ट्रू दैट आपको इमेजिनरी थिंग्स तो यूज करनी पड़ेंगी. कुछ सेंसरी डिटेल्स लिख दीजिए जिससे कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए. परसुएसिव में हमेशा आप आर्गूमेंट्स लिखेंगे, काउंटर आर्गूमेंट्स लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, परसुएसिव राइटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू बैकअप आर्गूमेंट्स. लेकिन वही हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वो इमेजेस, इमेजिनेशन से आपके बिलीव करेगा, जबकि नरेटिव राइटिंग जो है वो आपके डायलॉग और एक्शंस पे बिलीव करेगा. तो जब भी आप इन तीनों राइटिंग स्टाइल्स को लिख रहे हैं एज पर योर क्वेश्चन और एज पर रिक्वायरमेंट, प्लीज बी वेरी वेरी माइंडफुल फॉर फॉलोइंग दीज थीम्स. दैट इज वाई पीपल से ना दैट इंग्लिश बोलनी आ गई बहुत है, बस एक बार समझ में आ गई बहुत है. नहीं, if you are a good writer, if you can write effectively, if you can write without error, then you can speak also without error. राइटिंग में ही आपकी कमी है, राइटिंग में ही अगर दिक्कत है तो आपको बोलने में बहुत दिक्कत आने वाली है. और राइटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन भाई. दैट इज ज़रूरी नहीं है हर जगह बोल के काम नहीं चलेगा ना. दैट यू हैव टू राइट योर एप्लीकेशन लेटर, कहीं आपको रिकमेंडेशन कराना है, कहीं रिकमेंड करना है, रेफरेंस लेटर लेना है, रेफरेंस लेटर बनाना है, then you will be writing whole life applications and letters, then you should know how to write these things. Yes, or some of you, if you are preparing for examination there where you have mains exams or written exam and your medium is English, then you should know the types of writing. Let's move for the next part then. राइटिंग टिप्स फॉर डिफरेंट थीम्स. अब हम बात कर लें ये दैट क्या टिप्स हैं आपके जब भी आप ये थीम्स को लिख रहे हैं, तो आप क्या कौन कौन सी ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने पास रख सकते हैं दैट कैन हेल्प यू टू राइट इफेक्टिवली. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी सी दैट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दैट अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस आप लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना आर्टिकल लिखा, कोई आप अपना लाइफ का कोई लाइफ का आप कोई एक सीन बताना चाह रहे हैं, दैट कुड बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, फेलियर, बीइंग पास एग्जाम्स, योर एफर्ट्स एंड ऑल. इस केस में आप क्या करेंगे, आप पर्सनल एक्सपीरियंस जो लिख रहे हैं सबसे पहले उसमें आप ऑथेंटिक रहिए, रिलेटेबल लिखिए चीज़ को टॉपिक से, और इमोशंस को यूज़ करिए जिससे कि कनेक्टर जो रीडर है आपका वो इजीली आपसे कनेक्ट हो पाए, और जो कनेक्टर्स हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाए. उससे क्या चांस होगा कि आपका जो डेटा है उसको और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और जो रीडर्स हैं वो आपके रियली दे विल बी योर लवर, दे वांट टू रीड योर कंटेंट मोर एंड मोर. आई डोंट नो दैट कितने लोग आप लोग लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं. आप कभी लिंक्डइन पर अगर आप यूज़ कर रहे हो देन यू गो सर्च ऑन लिंक्डइन माय नेम निकेतन मिश्रा एंड आई राइट सम आर्टिकल्स. अभी कुछ दिन से नहीं लिखे हैं मैंने, अराउंड 1 महीने से. आई राइट सम आर्टिकल्स एंड आई पेस्ट देम देयर, यस, और आई पब्लिश देम देयर.
then that really give me happiness. Sometimes I write my personal experiences as per my job, what is going on currently, students experience. So there this knowledge, where this knowledge helped me a lot, which I am telling you here is, सोशल इश्यूज को अगर आप लिखने जा रहे हैं तो रिसर्च कर लीजिए थोरोली, क्रेडिबल सोर्स देखिए आप और बैकअप करिए अपने आर्गूमेंट्स को। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने। मान लीजिए अभी यूपी में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, आप उसको इशू डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो भाई लिखने से पहले रिसर्च कर लो कि सच में वो हो रहा है नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो उसको थोड़ा बेसिक से जानने की कोशिश करिए, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीज़न क्या है, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तब उसको अपने इश्यूज में ऐड करिए, अदरवाइज इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जब आप इमेजिनेशन स्टोरीज बनाने जाएं, कुछ इमेजिनेशन लिखने जाएं तो अपनी खुद की क्रिएटिविटी लिखिए उसमें, इधर उधर से कॉपी कोशिश कर मत करिए। आप कभी भी डरिए मत कि एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड वर्ड्स, कभी भी मत डरिए कि मैं लाओ थोड़ा सा किसी से पूछूं, बुरा तो नहीं होगा। और आज की डेट में तो बहुत अच्छा है, किसी से मत पूछो, यू हैव AI, मेटा AI, चैट जीपीटी एंड ऑल, दे हेल्प यू, these resources help you a lot, or read articles, many websites and things are there on Google, you can explore your writing styles। मोरल लेसन्स, अभी आप कोई मोरल लेसन्स लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन लेसन्स लिख रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बी क्लियर अबाउट द मैसेज यू वांट टू कन्वे एंड प्रोवाइड एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट द लेसन। लेट्स से मान लीजिए मुझे एक स्टोरी लिखनी है कि मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी पेन नहीं चुरानी चाहिए, पेंसिल नहीं चुरानी चाहिए। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ये काम कर लेते हैं, तो मुझे बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा अपने मैसेज के प्रति कि स्टोरी चाहे कितनी बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बच्चों को समझ में आना चाहिए कि पेन और पेंसिल हमको एक दूसरे की नहीं चोरी करने हैं, हमको अपने पेन पेंसिल यूज़ करने हैं। ये सेम सो मोरल लेसन्स में इसीलिए जो मैसेज होते हैं उनको बड़ा क्लियर लिखा जाता है जिससे कि लोग उसे ईजिली कैच कर सकें। साइंटिफिक टेक्निकल थिंग्स, अगर साइंटिफिक चीज़ें लिख रहे हैं, टेक्निकल थिंग्स लिख रहे हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी और प्रिसिशन पे बहुत ध्यान देना है भाई। अवॉइड jargon unless necessary and explain concept simply। जो भी आप, ये ना हो कि आपने बहुत सारा उसमें रामायण लिख दिया, पूरा लोग कहते हैं ना कि मेरा कि ये रामायण लिखता है वो लिखता है, तो रामायण मतलब वो रामायण नहीं जो हम पढ़ते हैं। रामायण मतलब देख बहुत ही लेंथी, इसने पूरा आर्टिकल लिख डाला लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन में वो नहीं लिखा। नहीं, जब आप कोई साइंटिफिक टेक्निकल थिंग्स लिख रहे हैं तो भाई आपको क्लियर तो होना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को तो आप इजीली एक्सप्लेन करते जाइए जिससे कल को कोई आपका आर्टिकल पढ़े, आपका डेटा पढ़े, डेफिनेटली द पर्सन शुड अप्रिशिएट यू। दिस इज डन। नाउ लेट्स सी हियर क्विकली, दिस इज योर होमवर्क। ये दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल, दोज आर विजिबल हियर। क्विकली रीड इट, यू ऑल रीड दिस। आई विल नॉट रीड, फर्स्ट यू रीड देन आई विल रीड। Okay, so now I have asked that Jenny has shared my email ID in chat box. There is a reason behind of it why I asked Jenny, that I'll tell you. Let's see. So let's say before that you see here that practical writing exercise, what you all have to do, ये छोटा सा आपको काम दे रहा हूँ मैं, अभी नहीं करना, 5-6 दिन में कर लेना आराम से। यू कैन टेक योर 2-3 दिन का टाइम ले लो। ये तीनों स्टाइल में से नरेटिव थीम्स, डिस्क्रिप्टिव थीम्स, परसुएसिव थीम्स, तीनों थीम में से आप किसी भी एक थीम को चूज़ कर लीजिए, और जो मैंने टॉपिक दिया है, जो लिख रहा हूँ, उसके बारे में आप 200 से 300 वर्ड लिखिए एक पेपर पर, उसका फोटो क्लिक करिए और मुझे ईमेल कर दीजिए। देन आई विल गिव यू फीडबैक ऑन इट। यस, so there I will be able to check that really are you able to follow these things or not। Write about a time you faced a challenge and how you overcome it। narrative style लिख दीजिए आपको सही लगे तो, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्टिव में आ जाइए, अपना फेवरेट प्लेस डिस्क्राइब कर दीजिए जहाँ सेंसरी डिटेल्स हो, साइट, साउंड, स्मेल को लगा के। परसुएसिव थीम लिखना चाह रहे हैं तो कोई आर्ग्यू और अगेंस्ट लिख दीजिए। स्पेशली द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस।
इसके ऊपर लिख दीजिए आप। तो तीनों में से कोई एक टॉपिक लीजिए और उस पर 200 से 300 वर्ड्स लिखिए और यूज़ ज़रूरत है तो अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और फिर उसका फ़ोटो क्लिक करिए और मुझे भेज दीजिए। जब आप मुझे भेजेंगे उसके विद इन 48 टू 72 आवर्स मैं पढ़ के आपको रिटन फीडबैक के साथ उसी ईमेल पे रिवर्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि ऑनलाइन में तो यहाँ आप लिखेंगे भी तो इतना कितना लिखेंगे आप चैट बॉक्स में, तो आप लिख कर मुझे भेज दीजिएगा जिससे मैं चेक कर लूँगा कि आपको मेरी क्लासेस सच में समझ में आई है या नहीं आई। वेरी गुड इवनिंग हिमांशी, वेरी गुड इवनिंग स्वाति कंबले। नाउ लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द क्वेश्चन। जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, नरेटिव ये तीनों टाइप्स अच्छे से समझा दिए, ये भी बता दिया इनमें कौन कौन सी थीम यूज़ करनी है। अब आप लोगों को क्या करना है, आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। आपके पास 3 मिनट है और 3 मिनट में आपको तीनों क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे क्विकली आपको इनका आंसर बता देना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। So 3 minutes start now. So 3 minutes started. Read these questions and give answer in chat box quickly. Then I will tell you the correct answer. Let's do that. One minute 40 seconds are left. Last 10 seconds are left, everyone. Quickly do that. Do you need some time?
Okay, everyone. Times up. Let me see what answers you have submitted. Okay, wow, many people have given answer. That's nice. So Vishnu is saying first one is B. English with Himanshi, first one B. Second is B. Sriji flower decoration, first is B. Ankita is saying first is B, B. Third one is C. Okay. Vishnu, third one is A. So second one, Sriji, second is B, second A, third C, B, C. Okay, B, A, C. Okay, good job. So I am so happy that most of you are able to give mostly answers correct. Moreover, one answer is wrong. That let's quickly confirm it. And Badal has, I think Vishnu is the person. Vishnu or maybe Badal has given correct answers. So let's say everyone that first answer, correct answer is that B. So which is asking that most likely to be used in narrative writing, that is a story about overcoming a personal challenge. You are right, very good. You can clap for yourself. Second is what should be the primary focus when writing persuasive content is again B, convincing the reader to agree with your viewpoint, because it's all about persuasive writing. And B, it is asking for primary focus. Yes. And if we talk about third one, when writing a descriptive piece about a place, which element is most important? यानी कि अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जब भी आप descriptive लिख रहे हैं किसी भी प्लेस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, कौन सा एलिमेंट आप लिखेंगे वहाँ उसमें इंक्लूड करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्लूड करने के लिए डेफिनेटली उसकी साइट, उसका साउंड और उसका स्मेल, सेंसरी डिटेल्स आप ऐड करेंगे. सो बी ए, लाइक फर्स्ट वन बी, सेकेंड वन बी, थर्ड वन ए, दीज आर द करेक्ट रिस्पॉन्सेज. So good to see. Keep it up, people. These are the correct answers. So see, कल ही मैंने डिस्कस किया था आपके साथ दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक आंसर पता है लेकिन आपने उसको इधर उधर कर दिया. Now let's see writing tips for different themes. I think I have shared already. Tips of improving your writing skills. If we talk about the tips of improving your writing skills, यू हैव रियली परफॉर्म वेल, गुड जॉब. देख अब जब भी आप राइटिंग करने जा रहे हैं, राइटिंग लिखने जा रहे हैं, तो उन लाइक वेन एवर यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. दीज आर द 4 पॉइंट्स. रिमेंबर इट. लिखना चाह रहे हो लिख लो, याद कर लो, लाइक यू जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. एनी हाउ यू नीड टू रिक्वायर. इफ यू टॉक अबाउट सेट राइटिंग गोल्स, चैलेंज योरसेल्फ टू राइट अ शॉर्ट पीस एवरी डे ऑन डिफरेंट थीम्स. सबसे पहले अपने आप को टारगेट कर दो. जैसे कल मैंने कहा था कि हमें 30 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है रीडिंग के लिए. सेम राइटिंग के लिए डेली आपको टारगेट करना है कि मुझे कहीं से भी कैसे भी मुझे हर डेली एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग लिखनी है, एक टॉपिक एक पेज पर और एक आधे पेज पर 5 लाइन 10 लाइन जो भी आप लिख सकते हैं, और हर डेली मुझे हर डिफरेंट थीम पर लिखनी है. आज मैं नरेटिव पर लिख रहा हूँ तो कल मैं परसुएसिव पर लिखूंगा, नेक्स्ट डे मैं डिस्क्रिप्टिव पर लिखूंगा, फिर मैं डिस्क्रिप्टिव पर लिखूंगा, परसुएसिव पर लिखूंगा, नरेटिव पर लिखूंगा. इस तरीके से आपने आपको चैलेंज करिए, डेली अपने राइटिंग गोल लिख लीजिए कब और किस समय आपको लिखना है. When we talk about read and analyze, that what you have to do is study various genres and analyze how different writers approach the same themes. कभी भी एक ही तरीके की बुक्स मत पढ़िए कि आप फिक्शंस पढ़ते जा रहे हैं, आप नॉन फिक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, आप मोटिवेशनल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, आप जनरल स्टोरीज नहीं पढ़ रहे हैं. डिफरेंट जॉनर्स यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़िए और देखिए राइटर्स किस तरीके से अपने आप को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कंटेंट को अप्रोच कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से रीडर्स उनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं. तो लाइक यू हैव टू रीड एंड एनालाइज डिफरेंट अदर्स राइटिंग. लेटर ऑन इज एडिट एंड रिवाइज. ऑलवेज रिव्यू योर राइटिंग टू इम्प्रूव क्लैरिटी, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. कभी भी सबमिशन मत करिए. जब भी आपने अगर जल्दी भी लिख लिया है आपने, तो बिफोर सबमिटिंग जस्ट चेक इट. पंक्चुएशन एरर, कैपिटलाइजेशन एरर, सेंटेंस एरर, स्पेलिंग एरर्स, then you need to find that and then you can complete it, that edit it, then you submit it. Least but last, which is all about write with purpose. Know your writing theme and your audience before you start. So जब भी लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि that जब भी आप लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कब आप वो करने जा रहे हैं, कौन सी थीम आप लिख रहे हैं, क्या आपका पर्पस है राइटिंग का, क्यों लिख रहे हैं आप, ये आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए.
So these are the four themes, four tips especially, which can help you to understand your writing skills, and that people can also definitely start supporting you and appreciating you for writing skills. But before that, you have to start following these four tips for improving your writing skills. Yes. So let's quickly summarize the lesson. So today we have talked about writing and in evolving skills that improves with practice and knowledge. Embrace different themes and writing styles to build versatility. Yes. आज हमने क्या किया कि हमने जाना कि like what is the value of writing. We also talked about the different types, different styles of writing which help us to become versatile. So this was all about from today's session. If you have any question, please ask. Anything you like in today's class, you do not like in the class, what was good, what was bad. So please share. Please share how was your experience of today's class. Please share. I'm asking something, people. Do you have any question? Please ask. नहीं पता? Please share. Sorry, Himanshi. There is no any fixed time for you. Means, are you asking time for the class? May I know, sir, why? Why? Actually, Himanshi, that live class time is 8 to 9, dear. And this week I am busy at branch, in some branch, some work. So that is why I have shared already with the viewers that class time has been changed for this week only till Monday. Till Monday the class time is 9 to 10. Otherwise the class time is same, 8 to 9. So this class is 8 to 9, 9 to 10 nowadays for 2-3 more days. Yes, and that is otherwise the class time is 8 to 9. I think others also know that. Others, you don't have any question? Anything, any feedback for the class? You like something? You don't like something? Okay. If you don't have any question, there is no statement, then we can move for the day. Thanks for joining, people. Let's move tomorrow in the class where we'll be practicing reading, writing more. Upcoming 2-3 days, we'll be practicing reading, writing in the form of the same questions. Or I can ask you to write as well something. Yes. I checked many times. Himanshi, listen to me very carefully. The class time is 8 to 9. But because of I am busy at branch, so that I get free from branch 8:30. 8:40 around, then I come home by 8:55. So the class is starting 9 to 10. Till Monday I am busy at the branch. By Tuesday the class time is by 8 to 10, 8 to 9. Okay. So everyone, please revise this learning, whatever you have learned. One of the very important lesson we have discussed today, because you will not learn these things like this. Nobody will tell you these things which I have shared you here. So revise if you require. अगर ज़रूरत है दोबारा वीडियो देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाइए इनके टाइप्स ऑफ राइटिंग के थीम्स के, अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज वी रिक्वायर फॉर अपकमिंग डेज. अपकमिंग फ्यू डेज विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली. बस प्रैक्टिस करनी है, मैं और कुछ नहीं करना. ओके, so till that we all can do one thing only. Thanks for joining. We can call it the day here.